Hello viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss the question answers and back exercises of the poem What a Bird Thought. Summary is already there on my channel. You can visit my channel. So let us start the video. But before that, if you are new on my channel, please subscribe my channel. Okay, let us see which is the first question of the back exercise. Answer the following with a word from the poem and check the answers with your partner. This is the question number 3 of back exercise. What was the shape of the bird's first house? It was round. What was the bird's second nest made of? It was made up of straw. What did the bird see when it came out of its nest? Leaves. What did the bird do at the end? It flew. Next is true false. The bird changed its house 2 times. No, it is false. The neighbors tell the bird about the world. No, again it is false. Now these were the back exercises. Now let us see the question answers. The first question is read the following lines from the poem and answer the questions given below. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. Who lived in the nest along with the baby bird? Baby bird के साथ और कौन रहता था उसके nest में? The baby bird's mother lived along in the nest. Mother रहती थी उसके साथ. Next, complete the following by choosing the correct option. The bird thought the world was made of straw. क्यों सोचा उसने कि जो संसार है वो स्ट्रॉ से बना हुआ है? Because its nest was made up of straw. This is the correct option. क्योंकि उसका नेस्ट स्ट्रॉ से बना हुआ था तो उसको लगता था कि पूरा का पूरा संसार ही स्ट्रॉ से बना हुआ है. नेक्स्ट, which word tells us that the baby bird was warm and comfortable? किस वर्ड से आपको पता चलता है कि वो बहुत कंफर्टेबल था, अपने नेस्ट में बहुत आराम से रह रहा था? The word is nestled. The word nestled tells us that the baby bird was warm and comfortable. Next question. I said the world is made of leaves. I have been very blind. Why did the bird think the world was made of leaves? अब उसको क्यों लग रहा था कि वर्ल्ड जो है वो लीव से बना हुआ है? The bird thought the world was made up of leaves because when it started flying and sat on the tree branches, it could see leaves all around. यहाँ पे ये ठीक कर लीजिए, it is not tree branches, it is tree branches. तो बर्ड जो है जब उड़ना शुरू किया उसने और ब्रांचेस पे बैठने लगा तो उसके आसपास पत्ते ही थे, तो उसे लगने लगा कि जो वर्ल्ड है वो पत्तों से बना हुआ, लीव्स से बना हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन? आई सेड मीन्स स्पोक. नेक्स्ट, fill in the blanks. The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves from inside the nest. Why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? Baby bird को ऐसा क्यों लगा कि जो उसका पहला वर्ल्ड था, उसका संसार था, वो एक छोटा सर्कुलर राउंड और ब्लू कलर का था? द बेबी बर्ड थॉट दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू बिकॉज इट वॉज इन द एग विच वॉज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू. क्योंकि वो एग के अंदर था. एग स्मॉल भी होता है, राउंड भी होता है और उसका एग ब्लू कलर का भी था, इसलिए उसको लगा कि जो वर्ल्ड है वो ऐसा ही दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where did the bird go when it fluttered from its straw nest? जब उसने उड़ना शुरू किया तो अपने नेस्ट से उड़ के वो कहाँ पे गया? The bird went to a tree and sat on a branch when it fluttered from its straw nest. तो जब वो फ्लटर किया, उसने पहली बार उड़ने की कोशिश की तो वो
एक ब्रांच पे जाकर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? जब वो उड़ने लगा तो उसने क्या कहा कि मेरे में कौन सी क्वालिटी है? When it flew away, the bird said that it had been blind. उसने कहा मैं तो अभी तक अंधा था। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वर्ल्ड किस चीज से बना हुआ है। When it flew away, the bird said that it had been blind means it was ignorant till then. उसको कुछ पता नहीं था। Who do you think were the bird's neighbors? Why do you think so? आपको क्या लगता है उसके पड़ोसी कौन थे? अरे भाई, जो पेड़ों पे रहेंगे उसके साथ वही उसके पड़ोसी होंगे। सो आई थिंक द बर्ड्स नेबर्स वर स्क्विरल्स, बटरफ्लाइज, एंट्स एंड अदर बर्ड्स बिकॉज दीज क्रीचर्स ऑल्सो लिव ऑन द ट्रीज। तो जो पेड़ों पे रहने वाले दूसरे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो ही उसके नेबर्स थे। So that is all for this chapter. If you find my video useful, please share and like it.